नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी अजमेर द्वारा कंडक्ट किए गए एमई AWM एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि कंडक्ट कराया गया था 18 मई 2025 को। इस वीडियो में सारे 110 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा और इसके पहले 4 मई 2025 को जो कंडक्ट कराया गया था उसके सारा क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लें, और अगर आप रेलवे ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट रेलवे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यू ICF कोच व्हील? ICF कोच का नए में व्हील डाया कितना होता है? तो ये होता है 915 mm नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट फॉर एन ICF कोच? इनमें से कौन सा कथन ICF कोच के लिए सही नहीं है? पहला ऑप्शन है द सेंटर पीवट pin transmit the tractive force. Second option है the side bearer takes the load of the coach body. Third option है anchor links are not designed to take tractive and braking force. And fourth option है equalizing step prevents lateral thrust on the booster spring. तो जो एंकर लिंक है are not designed to take tractive and braking force, तो यह कथन सही नहीं है क्योंकि ये ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स के लिए होता है। तो आंसर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द परमिसिबल लीकेज रेट इन कोचिंग रैक। कोचिंग रैक में परमिसिबल लीकेज रेट क्या है? तो 0.6 kg इन 180 सेकेंड और 3 मिनट, ये हमारा परमिसिबल लीकेज रेट होता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन व्हील डिफेक्ट इन LHB कोचेज? फर्स्ट है फ्लैट टायर, सेकेंड थर्मल क्रैक्स, थर्ड थिन फ्लेंज और डी सेल्फ थ्रेड। तो सेल्फ थ्रेड हमें मैक्सिमम टाइम मिलता है, तो ये हो जाएगा सेल्फ थ्रेड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द रूफ माउंटेड AC पैकेज यूनिट वर्क एट। तो ये होता है 415 वोल्ट 3 फेज AC सप्लाई में। तो आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वेजडा? वेजडा का फुल फॉर्म क्या है? वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन अपरेटस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। Question number 7, which device of the FIVA system maintain the pressure difference between the air spring of the secondary suspension in the same bogie? कौन सा डिवाइस है जो कि प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता है? डुप्लेक्स चेक वल्व, बी है इंस्टॉलेशन लेवल, सी लेवलिंग वल्व या डिस्ट्रीब्यूटर वल्व? तो डुप्लेक्स चेक वल्व इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, LHB coaches are provided with which type of couplers? H type, E type, HTEA type और अलायंस 2 टाइप। तो H टाइप, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। H टाइप CBC हम लोग LHB कोच में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बोगी एंड द बॉडी ऑफ अ LHB कोच इज ट्रांसमिटेड थ्रू। ऑप्शन ए ट्रैक्शन सेंटर, ऑप्शन बी एंटी रोल बार, ऑप्शन सी कंट्रोल आर्म और ऑप्शन डी यो डैम्पर। तो ट्रैक्शन सेंटर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वल्व इन LHB कोच हेल्प्स इन फास्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स व्हेन ड्राइवर अप्लाइज इमरजेंसी ब्रेक फ्रॉम द लोकोमोटिव? तो इमरजेंसी ब्रेक वल्व, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटर वल्व, ऑप्शन सी डम वल्व और ऑप्शन सी ब्रेक एक्सीलरेटर वल्व। तो ब्रेक एक्सीलरेटर वल्व इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्रॉ गियर ऑफ एन ICF कोच? ड्राफ्ट योक, डिस्ट्रक्शन ट्यूब, ड्रॉ बार और ड्राफ्ट की। डिस्ट्रक्शन ट्यूब, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ये ड्रॉ गियर का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड फॉर अ वेस्टिबुल कंपोजिट फर्स्ट AC 2 tier स्लीपर कोच विद सेल्फ जनरेशन? तो ये कंपोजिट कोच के ट्रांसपोर्टेशन कोड के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए है WGACCW, तो ये तो सेकेंड ईयर है। WGFAC ये फर्स्ट ईयर है। WFACCW, WGFACCW, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। WGFACCW होगा क्योंकि इसमें सेल्फ जनरेशन का बात किया है और सेल्फ जनरेशन में जी यहाँ पे लगा होता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंट वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ बॉक्सन HL CC रेक ऑन ट्रायल बेसिस एज पर रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का ट्रायल बेसिस पे जो बॉक्सन HL का CC रेक का जो BPC है वो कितने किलोमीटर और दिन के लिए है? क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है 7500 किलोमीटर और 35 + 5 डेज, ऑप्शन बी 10,000 किलोमीटर और 30 + 5 डेज, ऑप्शन सी है 10,000 किलोमीटर 35 + 5 डेज और ऑप्शन डी है 7500 किलोमीटर 30 + 5 डेज। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, 10,000 किलोमीटर 35 + 5 days, whichever earlier. Question number 14.
Which defect in the center buffer coupler assembly may lead to uncoupling of wagons? Option A, excessive wear of knuckle, excessive wear on lock, excessive wear in bearing piece slot of the operating handle. All the given options are correct. तो ये सारे ऑप्शंस ही करेक्ट होंगे. ये इनमें से कुछ भी होगा तो ये रीजन हो सकता है अनकपलिंग का. तो all options are correct. Question number 15. In which type of Kessner bogie the brake head is an integral part of the brake beam? 22 WM, 22 NL with non-BMBS, 22 NL with BMBS or 22 HS with BMBS. So 22 NL with non-BMBS. Option number B will be correct answer. Question number 16. What is correct about bogie mounted brake system in wagon? Provided with brake cylinder of 14-inch diameter, provided with L-type brake block, provided with 2 number of brake cylinder per bogie, or provided with brake cylinder with inbuilt slack adjuster. So option number D will be correct answer. Provided with brake cylinder with inbuilt slack adjuster. Question number 17. What is the condemning diameter of box and wagon wheel? Box and wagon wheel का condemning diameter क्या होता है? तो 906 mm होगा. वैगन का कंडेमिंग डायमीटर 906 mm होता है. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर. विच टाइप ऑफ ओपन वैगन इज डिजाइन फॉर साइड डिस्चार्ज? तो बॉक्सन HL, ऑप्शन बी BOB RN, ऑप्शन सी बोस्ट, ऑप्शन डी BOB YN. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर. BOB YN साइड डिस्चार्ज के लिए होता है. क्वेश्चन नंबर 19. विच टाइप ऑफ व्हील डिफेक्ट इज नॉट डिटेक्टेड बाय OMRS? फ्लैट टायर, हाई टेम्परेचर ऑफ बियरिंग, व्हील सेलिंग, अनयूजुअल साउंड ऑफ एक्सल. तो हाई टेम्परेचर ऑफ बियरिंग को OMRS के थ्रू डिटेक्ट नहीं किया जा सकता. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ अ प्रीमियम फ्रेट ट्रेन? ऑप्शन 1 व्हाइट, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी येलो और ऑप्शन डी पिंक. तो ऑप्शन विल बी ग्रीन विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. विच टाइप ऑफ ब्रेक वैन हैज Kessner bogie? VVZC, B VVCM, B VVZI or D none of the above option are correct. Option number B will be correct answer. VVCM जिसमें Kessner bogie लगा होता है. Question number 22. The axle general of which rolling stock is not mounted with tapered roller bearing? LHB coach, वंदे भारत कोच, ICF कोच और बॉक्सन वैगन. तो ICF कोच will be correct answer. इसमें spherical type bearing लगा होता है. Question number 23. What is the function of traction inverter in 3-phase propulsion system of वंदे भारत train set? वंदे भारत से क्वेश्चन है. ऑप्शन ए कन्वर्ट ट्रांसफर आउटपुट इनटू सिंगल फेज AC. ऑप्शन बी कन्वर्ट ट्रांसफार्मर आउटपुट इनटू DC. कन्वर्ट DC आउटपुट फ्रॉम DC लिंक टू सिंगल फेज AC. ऑप्शन डी कन्वर्ट्स DC आउटपुट फ्रॉम DC लिंक टू 3-phase AC of variable voltage and variable frequency for supply of traction motor. The option D will be correct answer. Question number 24. In Elco locomotive, the air compressor is driven by option 1 the diesel engine crankshaft through a flexible coupling. Option B the diesel engine crankshaft through a gear drive. The power supply from auxiliary generator. Power supply from the main alternator. So option A will be correct answer. The diesel engine crankshaft through a flexible coupling. Question number 25. What is the purpose of pressurized water cooling system in diesel loco? So, option A helps in dissipating more heat. Option B reduction of incidence of hot engine. In option C increase the boiling point of water. Option D all the options are given correct. So, option D will be correct answer. All the given options are correct. Question number 26. In EMD or HHP locomotive, radiator cooling fan assembly is driven by option A diesel engine crankshaft through level gear arrangement. Option B 3-phase induction motor. C exhaust gases or D DC motor. So option B will be correct answer. 3-phase induction motor. Question number 27. The companion alternator of EMD HHP locomotive supplies power to battery charging unit, B fuel booster pump, C radiator cooling fan or none of the option are given. So C will be correct answer. Radiator cooling fan motor. Question number 28. Which type of bogie are used in HHP EMD locomotive? Cast iron, steel fabricated, high tensile cast steel or none of the above. So high tensile cast steel will be correct answer. Question number 29. What is the compression ratio of Elco loco engine?
ऑप्शन ए 16:1, ऑप्शन बी 14.5:1, ऑप्शन सी 11.75:1 और ऑप्शन डी 9.5:1. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर 11.75:1. Question number 30. What can cause water contamination with lube oil in diesel engine? Option A, cylinder heat gasket damage. Option B, piston ring worn out. Option C, faulty fuel injector. Option C, excessive idling of the engine. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, सिलेंडर हेड गैस्केट डैमेज. इसके वजह से कंटेमिनेशन हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज ऑफ लो compression pressure in diesel engine? Option A, excessive cylinder linear wear. Option B, lube oil strainer dirty. Option C, fuel oil filter dirty. और ऑप्शन डी, वाटर मिक्सड विथ lube oil. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, एक्सेसिव सिलेंडर लीनियर वियर. क्वेश्चन नंबर 32. Which is not correct about specific fuel consumption of diesel engine? Option A, it is the measure of amount of fuel consumed to produce a unit of power. Option B, a high efficient engine will have high specific fuel consumption. Option C, specific fuel consumption varies with the size of the engine. Option C, specific fuel consumption can vary with the engine speed of the load. So option number B will be correct answer. A high efficient engine will have high specific fuel consumption. Question number 33. What is the ratio of crankshaft speed to camshaft speed in 4-stroke engine? Option 1, 1:1. Option 2, 2:1. Option C, 1:2 or none of the above option are correct. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, 2:1 के रेशियो में होता है. क्वेश्चन नंबर 34. एज पर RDSO शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन रिवीजन 4, D check of 1400 HP demo DPC of Cummins engine is done in option 1, 12 month, option B 18 month, option C 24 month और option D 36 month. तो option B will be correct answer, 18 month. Question number 35. Which valve in the lubricating oil system of demo DPC engine protects the lube oil pump from high pressure and controls the lube oil discharge pressure? Option A, pressure regulating valve. Option B, bypass valve. Option C, pressure relief valve. और option D, none of the options are given. तो option C will be correct answer, pressure relief valve. Question number 36. What may not be the cause of single passing at danger by loco pilot? Inadequate rest before joining duty, overdue road learning of the section, poor quality of food in the running room, और पुअर ब्रेक पावर इन द ट्रेन. तो पुअर क्वालिटी ऑफ फूड इन रनिंग रूम विल बी करेक्ट आंसर. ये नहीं हो सकता, बाकी सारा हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट शुड बी द रोल ऑफ लोको पायलट इन केस ही एक्सपीरियंस अ जर्क वाइल वर्किंग अ मेल एक्सप्रेस ट्रेन एज पर द GSSR प्रोविजन? ऑप्शन, इन्फॉर्म द स्टेशन मास्टर ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन थ्रू walkie talkie and run through his train without stopping. Option B, stop his train at next block station without clearing the block section and inform the station master. Option C, stop his train at the next scheduled stopping station, clearing the block section and inform the station master. Or option D, work his train on his destination station and inform the lobby during the signing of the duty. तो option B will be correct answer. Stop his train at next block station without clearing the block section and inform the station master. Question number 38. Which of the given option is not a common type of defect that ultrasonic testing can be detect in Excel? Cracks. B, material inclusion. C, stress concentration. And D, corrosion. So corrosion will be correct answer. Question number 39. Which is not a fixed signal? होम सिग्नल, डेटोनेटिंग सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल और संटिंग सिग्नल. तो डेटोनेटिंग सिग्नल ये जो है ये फिक्स सिग्नल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज नॉट अ मैंडेटरी फील्ड रिक्वायर्ड टू बी फील्ड फॉर लॉजिंग अ कंप्लेंट थ्रू रेल मदर? ऑप्शन नंबर 1, PNR नंबर और UTS नंबर. ऑप्शन नंबर बी, नेम ऑफ पैसेंजर. ऑप्शन नंबर सी, ट्रेन नंबर और टाइप ऑफ कंप्लेंट. तो नेम ऑफ पैसेंजर
ये दर्ज कराना जरूरी नहीं है जब आप रेल मदद कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, what should be used in lifting a coach by 140-ton breakdown crane to prevent damage of the coach body? Option number 1, steel wheel wire rope, chain sealing, lifting beam, or none of the above. So lifting beam will be correct answer. Question number 42, which type of accident will not be covered under consequential accident? Option 1, derailment of coach train leading to loss of life, signal passing at danger, accident at level crossing gate leading to death of the passenger traveling in a road vehicle, fire in passenger train leading to the injury of passenger. So option B will be correct answer, signal passing at danger. Question number 43, which cold cutting equipment in ART ARMB is used for making holes? तो पावर सेवर सो, बी निबलर मशीन, सी एंगल ग्राइंडर और डी ट्रिप पेनर. तो डी विल बी करेक्ट आंसर, ट्रिप पेनर. क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NMDA? तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDRF? NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46, as per Indian Railway Accident Protocol, in case of serious accident, which department is responsible for arranging ex gratia payment to the next kith and kin of the injury of that passenger? So commercial will be the responsible. So B will be correct answer. Question number 47, what type of braking system is provided in 140-ton breakdown? थ्रेड ब्रेकिंग, एक्सल माउंटेड ब्रेक डिस्क, इलेक्ट्रोनोमेटिक ब्रेक डिस्क, व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क. तो इसमें व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क होता है. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48, विच इज नॉट अ सेफ मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ 140-ton ब्रेकडाउन क्रेन ड्यूरिंग रिस्टोरेशन वर्क? तो ऑप्शन ए, पार्किंग ब्रेक्स टू बी अप्लाइड इन अप्लाइड कंडीशन. ऑप्शन बी, देयर शुड बी नो गैप बिटवीन इन रिगर एंड आउट रिगर. Option C, joystick operation to be done smoothly. Option D, safe load indicator to be overridden by the crane operator if required. So option D will be correct answer. Question number 49, which elements make stainless steel corrosion resistance? Option number 1, vanadium. Option number B, sulfur. Option number C, chromium. Option number D, carbon. So chromium will be correct answer. Question number 50, what is the maximum speed for B class ODC? Option number 1, 25 kmph. Option number B, 30 kmph. Option number C, 40 kmph. और option number D, 50 kmph. The 40 kmph will be correct answer. Question number 51, which type of manufacturing unit will adopt processing casting method to arrive at the unit cost? Option number A, manufacturing of locomotive. Option number B, manufacturing of coaches. Option number C, manufacturing of wheels. Option number D, manufacturing of wagons. So option number C will be correct answer, manufacturing of wheels. Question number 52, who is responsible for appointing the occupier of the factory for railway workshop as per the Factory Act 1948? Option number 1, principal chief personnel officer. B, general manager. C, principal chief mechanical engineer और chief workshop engineer. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल मैनेजर. क्वेश्चन नंबर 53, विच सेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई द जॉब कार्ड एंड रूटीन कार्ड? ऑप्शन नंबर 1, इंस्पेक्शन सेक्शन. ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेस सेक्शन. ऑप्शन नंबर सी, रेट फिक्सिंग सेक्शन. एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज करेक्ट. तो इंस्पेक्शन सेक्शन विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए. Question number 54, which is correct about the group incentive scheme followed in Indian Railway Production Unit or workshop? Option number A, allowed time is so fixed that an individual worker of normal ability may can earn incentive bonus of 33.33%. Option number B, incentive earning is not linked with the target outturn of the entire production of a unit. Option number C,
Staff are categorized as direct, essential, indirect, and indirect for the purpose of incentive payment. Option number D. Ideal time can only be booked on account of power failure exceeding 1 hour. So option number D will be correct answer. Question number 55. As per Factory Act 1948, the total number of hours of works, including extra hour worked on payment of overtime in any week, shall not exceed. Option A 48 hour, option B 60 hour, option D 75 hour, option D 90 hour. So option B will be correct answer, 60 hour. Question number 56. Under which act protection of worker against exploitation of employers is ensured? Option A Factory Act, option B Trade Union Act, option C Industrial Dispute Act, or option D Payment of Wages Act. So option B will be correct answer. Question number 57. Which is a public sector unit under Ministry of Railway? A. Rights, B. RVNL, C. IRCON, or D. All of the options are correct. So all of the options are correct. Question number 58. Which of the following soap is not considered as production soap in a workshop production unit? So option A wheel soap, option B body repair soap, option C paint soap, or option D millwright soap. So option C millwright soap will, option D millwright soap will be correct answer. Question number 59. Which is not correct about PU painting as compared to the alkyd painting? Option A better adhesive resistance, option B better corrosion resistance, option C low cost, or option D better gloss retention. So option C will be correct answer, low cost. Question number 60. Which is not a surface cleaning process before application of painting? Wet flattening, hot phosphating, short blasting, or de-scarping. The wet flattening, option A will be correct answer. Question number 61. The defect of rupture of top layer of the paint film is called peeling, sagging, flaking, dry spray. Peeling will be correct answer. Question number 62. Electrical fire is categorized as class A, class B, class C, or class E. So class E will be correct answer. Question number 63. Which welding process does not use a consumable electrodes? Manual metal arc welding, metal inert gas welding, submerged arc welding, or gas tungsten arc welding. So option D will be correct answer, gas tungsten arc welding. Question number 64. In a casting process, a column of molten metal placed in the mold to feed the casting as it shrinks and solidified is known as riser, runner, gate, or core. So riser will be correct answer. Question number 65. What is essential requirement for the fogging process? A. Mold, B. Pattern, C. Die, D. Core. So die will be correct answer, option number C. Question number 66. Which of the testing process is not a non-destructive test? A. Ultrasonic test, B. Impact test, C. Magnetic particle test, or D. Die penetration test. So impact test will be correct answer. Question number 67. Which heat treatment process is not used for surface hardening? A. Carburizing, B. Nitriding, C. Tempering, and D. Cyaniding. So tempering will be correct answer. Question number 68. Machining operation which uses cutter having multiple cutting edges is milling, shaping, turning, or planing. Milling will be correct answer. Question number 69. What is the shape of the speed indicator board placed alongside of the railway track? Circular, triangular, square, or horizontal with flash tailed and left the pointer to the right? So triangular will be correct answer, option B. Question number 70. Which information is not available in railway working timetable? Permanent speed restriction, maximum permissible speed of train, temporary speed restriction, or engineering allows for speed restriction? Temporary speed restriction will be correct answer. Question number 71. In which article provision regarding official language to be used in Parliament is available? Part 5 of the Constitution. Article 120, Article 351, Article 210, and Article 343. So Article 120 will be correct answer. Question number 72. Mention the name of the award to be given for writing the book in Hindi poem by the Railway Board. मैथिली शरण गुप्त अवार्ड, प्रेमचंद अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, और महात्मा गांधी अवार्ड. तो मैथिली शरण गुप्त अवार्ड will be correct answer. Question number 73.
Which of the film state do not comes under B region under official language rule? Maharashtra, Gujarat, West Bengal or Punjab? So West Bengal will be correct answer. Question number 74. Which course for central government employee is considered equivalent to the Hindi or the 10th higher school level? Prabodh, Praveen, Prangat or Pragya? The Pragya will be correct answer. Question number 75. Under section 33 of Official Language Act, what to be issued on the both Hindi or English? Tender notice, press release, general order, all of the options are correct. All of the options are correct. Question number 76. Who is the chairman of Zonal Official Language Implementation Committee? Option A, Additional General Manager. Option B, Mukhya Raj Sabha Adhikari. C, Deputy General Manager or General Manager. So General Manager will be correct answer. Question number 77. When is National Hindi Day celebrated? 10th June, 15th July, 14th April or 14th September? So 14th September will be correct answer. Question number 78. How many languages are included in the 8th schedule of the Constitution? Option A 20, option B 22, option C 23, option D 24. So 22 will be correct answer, option B. Question number 79. What is the synonyms of Hindi word Sundar? Manohar, Kushal, Sanvedan, Nipun. So Manohar will be correct answer. In which of the following pairs? Question number 80. In which of the following pairs correct Hindi translation of the English word is not given? तो सस्पेंशन, निलंबन, सेटलमेंट, समाधान, रिकमेंडेशन, समझौता, एग्जीक्यूटिव, निष्पादन. तो रिकमेंडेशन, समझौता ये करेक्ट नहीं है इसमें, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81. द minimum medical category for direct recruitment of junior engineer of production unit is option A A3, option B B2, option C B3 or option C C1. So C1 will be correct answer. 82. Which is not correct for child care leave? Child care leave के लिए क्या correct नहीं है? Option A, the female railway employee can avail 730 days of the care leave during the entire service of the peer. ये correct है. Child care leave can be combined with any other kind of leave. ये भी correct है. The employee will get the full salary of the entire period of the 730. नहीं, ये correct नहीं है. Full पे केवल एक साल के लिए मिलता है और नेक्स्ट एक साल के लिए 80% मिलता है. तो ये गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट ऑप्शन है अ सिंगल मेल रेलवे एम्प्लॉय कैन ऑल्सो अवेल 730 या चाइल्ड केयर लीव. हाँ, सिंगल मेल पेरेंट अगर है तो वो अवेल कर सकता है. तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 83. व्हाट इज नॉट करेक्ट अंडर MSCP स्कीम? इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 6th पे कमीशन. ऑप्शन बी, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन गारंटेड टू एन एम्प्लॉय फॉर 3 times इन अ सर्विस पीरियड इन केस ऑफ नो प्रमोशन. Option C, seniority of the concerned staff get changed with their grant MSCP. और ऑप्शन डी, अलाउंसेस एज पर द प्रोविजन ऑल्सो इंक्रीजेज विद द ग्रांट ऑफ MSCP. तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा. द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ अ गेजेटेड ऑफिसर ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इज केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ विच डिपार्टमेंट? ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट, बी पर्सनल डिपार्टमेंट, सी अकाउंट्स डिपार्टमेंट और जी जनरल मैनेजर्स ऑफिस. तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 85. In which of the following works the expenditure should not be charged to capital? Mechanized cleaning of cloth. Option B, gauge conversion. Option C, setting up a new production unit. D, yard remodeling. The mechanized cleaning of coaches will be correct answer. Question number 86. Which one of the revenue earning of railway is not considered as sundry revenue? A, earning from commercial publicity. B, earning from catering. C, earning from parcel traffic. D, earning from non-fare revenue. So C will be correct answer, earning from parcel traffic. Question number 87. What is the maximum value of work under PH 4200 which can be sanctioned under GM's power? Option A 5 crore, option B 10 crore, option C 20 crore and option D 50 crore. So option B will be correct answer, 10 crore. Question number 88. Which of the passes cannot be withdrawn in electronic form through HRMS? A, post-retirement compulsory passes. B, widow passes. C, check passes. Or D, school pass for bona fide student. So D will be correct answer, school pass for bona fide student. Question number 89.
What is the name of the application used for hospital management of Indian Railway? HMIS, UMID, ARPN, ARPAN, HRMS. So HMIS is the correct answer. Question number 90. What is the maximum permissible limit percentage of commutation of pension? Commutation of pension. 30%, 40%, 50% or 60%? 40% will be correct answer. Question number 91. What is the correct entitlement of railway employee placed under suspension during the suspension period? A. Entitled for full salary. B. Entitled for LAP. C. Entitled for leave headquarter without permission. D. Entitled for medical treatment. So, D will be correct answer, entitled for medical treatment. Which of the following is not a major penalty? A. Recovery from pay or pecuniary loss caused to government by negligence of bench of order. B. Compulsory retirement. C. Removal from service. D. Dismissal from service. So, A will be correct answer. 93. Maximum limit of encashment of LAP during service is 60 days, 45 days, 30 days or 20 days. So, 60 days will be correct answer. Question number 94. Which module is not available in HRMS? Pass module, DAR module, leave module, cadre management module. तो D and AR module available नहीं है. Question number 95. Up to which value of tenders senior scale officer of executive department can tender committee member for work invited through open tender? Up to 1 crore, up to 4 crore, up to 5 crore, up to 10 crore. So option number B will be correct, up to 4 crore. Question number 96. Group A and B gazetted officer are entitled for how many sets of post-retirement compulsory passes in a year? 1 set, 2 set, 3 set or 4 set? So 3 set will be correct answer. Question number 97. How many pay metrics prescribed in 7th pay commission? 15, 16, 17, 18. So 17 will be correct answer. Question number 98. Which of the family member is eligible for family pension in the event of death of the railway employee pensioner? Spouse, dependent son below the age of 25 years, mentally retarded son. All options are correct. So all options are correct will be correct answer. Question number 99. What is the maximum amount of MNP that can be sanctioned by PCME under PH 4100? Option A 10 lakh, option B 50 lakh, option C 1 crore and option D 5 crore. So 50 lakh will be correct answer. Question number 100. What is the percentage ceiling of environmental related works in the works estimated under plan head? 0.25%, 0.50%, 1% or 2%? So 0.50% will be correct answer. Question number 101. How many digits are there in PL number of stock item? Option A 6, option B 8, option C 10, option D 12. So 8 will be correct answer. Question number 102. Which of the following railway staff will fall under category of essential entitlement under HYER? Waiting room barrier. Option B station master, option C section controller, option D train ticket examiner. So waiting room bearer will be correct answer. Question number 103. What is the minimum qualifying service required to be eligible for pension? Option A 5 years, option B 10 years, option C 15 years, option B D 20 years. So 10 years will be correct answer. Question number 104. What is the amount of performance guarantee to be submitted by the successful bidder after awaiting the contract? 2% of contract value, 5% of contract value, 10% of contract value, or none of the options are correct. The option B will be correct answer, 5% of total value. Question number 105. Which of the given service contract can be executed through GEM? Option A mechanized cleaning of coach, option C station cleaning, option D onboard housekeeping of the service. All options are correct. So all options are correct. Question number 106. What is the correct about rate contract? Option A. During the period of its currency, the contract engaged to supply material on demand irrespective of quality as fixed unit rate of price. Option B. During the period of its currency, the contract engages the supply material
on demand for a fixed quantity at fixed unit rate or price. Option C, during the period of its currency, the contract engages the supply material on demand for a variable rate depending upon the demand quality. Option D, none of the options are correct. So option A will be correct answer. During the period of its currency, the contract engages the supply material on demand irrespective of quality of a fixed rate or price. Question number 107. The establishment matter of Indian Railway model schedule of power is detailed in which part? Part A, Part C, Part A, Part D. So part F will be correct answer. Question number 108. Which is not a penalty under DAR? Cessation, suspension, warning, compulsory retirement. So suspension is the correct answer. Suspension एक penalty नहीं है. Question number 109. What is the main group code of PL number of a stock item of carriage and wagon? 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 or 40 to 49. So 30 to 39 is the correct answer. Question number 1110. For what value of PAC item signature of PHOD is required in the intent? Above 5 lakh, above 10 lakh, above 20 lakh, above 25 lakh. तो above 25 lakh is correct answer. ये टोटल 110 क्वेश्चन आए हुए थे 70% LDC एग्ज़ाम का. तो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम.